Hey everyone, good afternoon. Hi. Hello. How are the backbenchers doing? Sorry, thoda energy boost ho gaya tha. Hi. How are you all doing, guys? Hi Akbar Ali. Good afternoon. Alright guys, फटाफट से वीडियो पे लाइक कर लो. Drop in a message if you are able to hear me and see me. What's up? Alright, this is our third lecture in arithmetic. Hi AD, good afternoon. ये अपना थर्ड लेक्चर है अरिथमेटिक का परसेंटेजेस पे. सो फार व्हाट वी हैव सीन इज इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज. वी हैव सीन हाउ टू do the translation. Yes, yesterday we saw how to do calculation of percentage, right? We saw some tricks. We saw how to do it in the standard traditional method. We saw how to split it, how to swap it, how to turn it into fractions, how to use approximation. Today what we are going to look at is one of the important aspects of percentage change. Yes, we will be looking at percentage increase, decrease, percentage greater, lesser, comparison. ठीक है? Hi Samarth, hello Mrinal, thank you very much Vipul. एकदम मेरे को एकदम 2001 का फील आ गया ये जोक सुन के. हाय निकुंज, हेलो विनीत. ऑलराइट, तो अभी स्टार्ट करेंगे. माय नेम इज अमित सुराना. आई एम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर. आई एम फ्रॉम चेन्नई. आई हैव ओवर 7 years of experience and I have trained over 2.5 lakh students. Also this is my telegram group. If you haven't joined this already, please go ahead and do that. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट परसेंटेज चेंज. नाउ normally we do it using a formula, right? So percentage change's formula is nothing but initial value or final value minus initial value, right? So final value minus initial value by initial value into 100. Yes, this is the formula. ये आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा. Any book that you take, you will get it. Okay, so let's say the value of a particular variable is 100. Yes, and in B it is 120. Yes, now the question is asking B is what percentage lesser than A. Quickly answer this guys. फॉर्मूला है आपके पास, वैल्यूज है आपके पास. क्विकली आंसर दिस. B is what percentage lesser than A. Quick. Hi Ishita, good afternoon. Hello Mrinal. Yes Vineet, I will do that. Yeah, I will share it. I will put it in that 90 days cat wala Google sheet. Okay, Vipul says 20. Okay, 20%. How about others? Akbar Ali says 20. Ishita says 20. Very good. Anyone else? जल्दी जल्दी करो, जल्दी. सिंपल है ना, फॉर्मूला है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट? दैट इज व्हाट वी थिंक कि सर फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूला का चीट शीट बना के रखेंगे, फॉर्मूला को ऐसा रट्टा मारेंगे a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ऐसा करेंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा कभी भी, राइट? Yes, how B is less than A. Very good Nikunj. Yes, so that is the thing, right? You have to be logical, not simply blindly follow the formula, right? Don't blindly follow the formula. You have to be logical. Yes, without logic you will not be able to answer any questions. Please note that. Without logic you cannot answer any question. Formula रख के नहीं होगा. Yes, so यहाँ पे logic क्या है? It is very clear that B is not lesser than A. Despite that, a lot of people had told me 20%. Yes, are you following me? Yes, so please read the question carefully. Okay, now okay, let me change this question. A is what percentage lesser than B? अब बोलो आंसर जल्दी से. A is what percentage lesser than B? ये तो क्लियर है कि A is lesser than B. Now it is clear that A is lesser than B, correct?
Quickly tell me, A is what percentage lesser than B? Jaldi. You have the formula. Quickly do it, guys. आज भीड़ कम है, क्या सीन है? आज लोग सैटरडे मनाने चले गए क्या? Quick, quick, quick. Guys, if you haven't hit like on this video, please do that, okay? हाँ. What is the answer to this question? B is what percent? A is what percentage lesser than B? AD says 16.67. ठीक है. Others? Nikon says 16.6. Okay. Mrinal says 16. Mrinal says 16. Okay, there are two Mrinals. Akbar Ali says 16. Now everybody is saying 16. Very good. Now look at this. What I will tell you is, don't blindly follow a formula. Yes, don't blindly follow a formula. Instead, what you can do is, look at this. Follow this. If the question is asking for increase, greater, decrease, lesser, these are the base values, right? So our new formula is going to be what? Look at this carefully, okay? Our new formula says percentage change is equal to difference, because they're talking about change. कितना बड़ा है, कितना घटा है, what is the difference? Yes, upon something called the base value into 100. Base value is always your reference value. ठीक है? Now in this question, what are they asking? A is what percentage lesser than B? Yes, so when they ask for lesser, the base value will always be the greater value. The base value will always be the greater value. For example, in this case क्या हो जाएगा? So percentage change is going to be difference. What is the difference between 120 and 100? 20 का difference है, divided by lesser का base value क्या है? Greater value. So what is the greater value among 100 and 120? 120 into 100. Clear? This is what? 1 by 6. 1 by 6 कितना है percentage में? 16.66 बार percentage. Yes. So when you start using this, अभी इसमें logic देखो, what is the logic behind it? If I say something is lesser, अभी मैं बोल रहा हूँ कुछ कम है, okay? Let's say the number of things in this hand is less than the number of things in this hand, है ना? इसमें चीजें कम है, इसमें चीजें ज्यादा. अब मेरे को कैसे पता कि ये किसी से कम है? How do I know that articles in this hand are lesser in value? क्योंकि मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ. किससे कंपेयर कर रहा हूँ? इससे कंपेयर कर रहा हूँ. Are you able to understand this? For example, let me say कि okay, I am saying that okay, let's say Great Khali. Okay, Great Khali is shorter. अब जब मैं बोल रहा हूं Great Khali is shorter, वो किससे short है? I can't say he is shorter than me. I can't say Great Khali is shorter than Rey Mysterio. मजाक हो जाएगा, right? So I have to compare Great Khali to someone taller, है ना? तभी मैं बोल सकता हूँ कि Great Khali किसी से छोटा है, right? Yes. So what will I do? I will compare him with Shaquille O'Neal. Yes, NBA superstar Shaquille O'Neal. Okay. तो अभी क्या हो जाता है? Now I am saying Khali is shorter. Why? Because there is someone taller than him, and I am comparing Khali to this person. Clear? That is why when we talk about lesser, we compare it with a greater value. Same thing applies for decrease also. For decrease also, it will be greater value. Yes, so if I ask from B to A, what is the decrease? Denominator में क्या रहेगा? Greater value रहेगा 120. Clear? What if I ask you increase or greater? Yes, let me put up a new question. B is what percentage greater than A? Quickly answer this. B is what percentage greater than A? क्या हो जाएगा अपना? Difference will be the same. Yes, here percentage change will be what? Difference is going to be the same, but what will be the base value?
What am I saying? I am saying Khali is taller than someone. Yes, if Khali is taller than someone, मतलब उससे छोटा कोई वैल्यू होगा, है ना? खली के कंपैरिजन में कोई एक शाहिद कपूर या कोई एक रे मिस्टीरियो होगा जिससे मैं बोल सकता हूं कि ही इज टॉलर. Yes, so what will be the base value? The base value when we talk about greater or increase will always be the smaller value. This will absorb any kind of confusions you will have. आगे जाके कितना भी क्वेश्चन को कितना भी घुमा ले, yes, आपका कोई भी कंफ्यूजन होगा इससे क्लियर हो जाएगा. Got it? राजपाल यादव, राइट मृणल, ओके. हाँ करेक्ट विनीत. वही प्रॉब्लम है कि अपन सोचते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट देन व्हेन दी स्मॉल थिंग्स मैटर तभी वेरी करेगा. तो स्मॉलर वैल्यू क्या है? 100. व्हाट इज दिस? 20%. डज दिस मेक सेंस एवरीवन? Yes, so when they ask for increase or greater, it will be the smaller value. When they ask for decrease or lesser, it will be the greater value. Yes. Alternatively एक hint है, base value identify करने का एक hint है, right? अगर greater या lesser बोले तो they will always use the word than. देखो, A is what percentage lesser than, B is what percentage greater than. Yes, so whenever they use the word than, whatever comes after than के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो अपना बेस हो गया. than के बाद क्या है? B है, B का वैल्यू क्या था? 120, बेस हो गया. than के बाद यहां पे क्या है? A का वैल्यू क्या है? 100, सॉर्टेड. यस करेक्ट मृणल. या सो ग्रेटर या लेसर बोले तो than के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो आपका बेस हो जाएगा. इंक्रीज और डिक्रीज अगर बोले, लेट्स से इफ आई एम सेइंग दैट इन 2010 द वैल्यू ऑफ समथिंग वाज 250. यस, in 2020 the value of that particular thing became 300. Yes, now if I ask you what is the percentage increase, what will be the percentage increase now guys? What is the percentage increase from 2010 to 2020? Quickly answer this. What is the percentage increase from 2010 to 2020? Use the same formula, कुछ difference नहीं है formula में. Percentage change will be difference between the values. Very good AD, superb Navneet, very good Nikunj. Yes, so percentage change will be what? Difference between 250 and 300 is 50. Positive है, negative है, कोई headache नहीं अपने को. Yes, what will be the base value? The base value will be what? Smaller value, which is 250 into 100. समझ गए? This is what? 1 by 5, that is 20%. Make sense everyone? Yes. Further, if they ask you, okay, let me rephrase this question. ठीक है, मैं इस question को थोड़ा सा rephrase करूंगा. The same question को let me rephrase it. If I ask you, look at this, if the price of whatever, if the price has to be brought back to the same value, brought back to the price or to the value in 2010, then what will be the percentage decrease? Quickly answer this now. If the price has to be brought back to the same value in 2010, then what will be the percentage decrease? Percentage decrease कहां से होगा? From 2020. Quick. Leonard says 16.66. Others? Okay, Leonard ने निकाल लिया. Navneet is saying 25%. Others? जल्दी. $16.66. Everybody says 16.66. तो अब अगेन लेट्स आस्क ourselves a question, right? परसेंटेज चेंज पूछा है. डिफरेंस 2010 और 2020 के वैल्यू में कितना है? 50 है.
Now what should be the base here? Base क्या हो जाना चाहिए? They are saying it has to brought back to the value in 2010. वो सब जाने दो, पूरा क्वेश्चन को जाने दो. अपन से क्या पूछा है? परसेंटेज डिक्रीज. डिक्रीज मतलब बेस क्या होना चाहिए? ग्रेटर वैल्यू. Yes, what is the greater value? 300. This will become our base. That's it. End of story. No discussions beyond this. Yes, this is ones, this is 6 times, 1/6 is nothing but 16.66%. Understood everyone? Yes, at this point no confusions. Yes, what will be the hint here? Whatever word comes after from के बाद, from यहाँ पे from है, from के बाद क्या है? 2020. So 2020 का value becomes our base value. From के बाद यहाँ पे क्या है वैल्यू? 2010 का वैल्यू. 2010 का वैल्यू is 250. So our base here was 250. Sorted? No confusions. So same logic. Increase, decrease. From के बाद वाला वैल्यू, greater, lesser than के बाद वाला वैल्यू. अगर लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्सिटी है then use this. Yes, shall we go through some examples now? अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे. Let's go. Let's try this question quickly. Leonard 20% increase is 16.66% decrease. Yes, we will talk about that. ठीक है? थोड़ा सा we will do some example questions, then we will talk about that. चलो quickly करो ये वाला. हाँ समर्थ, कल भी क्लास है. श्रुति एग्जाम के बाद से चालू हो जाएगा. वो एग्जाम के बाद से ही चालू हो जाएगा, रिजल्ट के बाद नहीं, एग्जाम के बाद ही. नवनीत सेज डी 36.36. अदर्स? शंकर सेज डी, निकुंज सेज सी डी, लेनर्ड सेज डी, एडी सेज डी, लेखना सेज डी. Very good. Superb Nikunj. Very good Akbar Ali. Very good Mrinal. Okay, question पढ़ेंगे. If Team India scored 300, Team India scored how much? 300. Team England scored 220. Then Team India score exceeds Team England score by what percentage? Yes, what do you mean by exceed? Exceed का मतलब क्या हो गया? Greater. Yes, exceed means what? Greater. Yeah, so they're asking percentage greater. So what is percentage change? Difference between these two, 300 minus 220 is 80 upon what should be the base value? Percentage greater बोला है मतलब base value क्या होगा? Bigger value और smaller value? Smaller value. 220 into 100. Clear? Yes, this is basically what? This is 24 times 20 11 times. 4 by 11 कल अपन ने देखा था. Yesterday we saw, right? Percentage from fractions. 1 by 11 is multiplying the numerator with 9. So 4 by 11 will be what? 4 को 9 से multiply किया 36, which is 36.36 bar percentage. Got it? Beautiful guys, very nice. So 36.36 is the right answer. Done? चलो let's move on to the next one. अगर आपको कोई डाउट है कहीं पर भी, if you have any doubts, any questions, any queries, बिना सोचे समझे पूछो. एक बार पूछ लो, फिर अपन उस पे रिग्रेट करेंगे कि क्यों पूछा था, इतना इजी था. ठीक है? हाय रिचा, नो इश्यूज रिचा, आ जाओ आ जाओ. क्विक. अच्छा गाइस, बहुत लोगों ने वीडियो पे लाइक नहीं किया अभी तक. अगर आप उनमें से हो तो कर लो लाइक. ठीक है? ओके, ऑप्शन सी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल गाइस. ऑप्शन सी, वेरी गुड.
तो यहां पे क्या है, इफ A score is 25% greater than B score, then by what percentage did B score less than A? Yes, so we will do this not using variable. आपको पता है how much I hate variables. Yes, so what we are going to do, we are going to do this using assumption. Let's assume B का score 100 है. If B score is 100, then what will be A score? 25% greater. What is 25% of 100? 25. तो उसको add किया तो what will be A score? 100 plus 25, 125. Yes. Here what happens? We have to find out what percentage did B score less than A. So percentage change is going to be what? Percentage change, difference between their score is 25 by what should be the base? Less बोला है. लेस मतलब ग्रेटर वैल्यू, और दैन के बाद क्या वर्ड आ रहा है? ए का वैल्यू इज व्हाट? 125 into 100. 25 once, 25 5 times, which is 20%. Yes, very good, super. Yeah, this particular question can actually be answered using something called A by N rule, which we will talk about in some time. Okay, इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे थोड़ी देर में. Yes, with using A by N rule. ये वाला क्वेश्चन ये करने में, this particular process will take you somewhere about 20 seconds. Yes, I will teach you a method in which you can do this in like less than 5 seconds. Okay, चलो, let's do the next question quick. हाँ, correct मृणाल, फॉलो कर रहे मतलब. सुपर. चलो अपन बात करेंगे, डोंट वरी. आज परसेंटेज चेंज A by N रूल पक्का खत्म करके जाएंगे. क्विकली ट्राई दिस. If 62 is 12.5% more than a number, then what is 56.25% of it? Quick. विपुल says D 279. ठीक है. अकबर अली says D. alright. Others? Shankar says D. Superb. Yes guys, others, जल्दी करो आंसर. Very good, superb. Navneet, Leonard, Zaina, Mrinal, Ishita are all saying D. AB is saying B. Okay. Nikunj is saying A. ठीक है. क्या हो गया? सब लोग D बोल रहे थे. Let's read this question now carefully. ठीक है. Let's read this question now carefully. If 62 is 12.5% more than a number, what are they saying? 62 is some number पे 12.5% of that number extra. Is this equation correct? Is this equation correct? 62 is 12.5% of that number more than that number, correct? Yes. So what does this mean? N plus 12.5% of N they are asking. Please keep that in mind. So what is this? N is 100% of N. N का मतलब क्या हुआ? 100% of N. So 100% of N plus 12.5% of N is 62. Agreed? When I say 4 is 1 more than 3, इसका क्या मतलब हुआ? When I say 4 is 1 more than 3, what does it mean? 4 is, look at the equation forming. First day पे अपन ट्रांसलेशन देखे थे, याद है? वैसा ही करना है. 4 इसका मतलब इक्वल टू 1 more than 3, है ना?
Yes, please be careful about this, okay? So we get 112.5 percentage. 100 plus 12.5, 112.5 percentage of n is 62. What are we to find out? हमें n का वैल्यू नहीं चाहिए. We don't want n's value. What do we want? We want 56.25 percentage of it. Yes, what do we know? 112.5 का हाफ करोगे कितना आएगा? What is half of 112.5? 56.25. करेक्ट. थोड़ा सा वहां पे प्रोएक्टिव रहने का, उधर पे थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहने का. यस, इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 56.25 परसेंटेज ऑफ n. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हाफ किया, राइट हैंड साइड में भी हाफ करेंगे. हाफ ऑफ 62 इज 31. ये रहा अपना आंसर विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट. यस, ओके. आज गलत चाय पी ली, मतलब चाय पे इल्जाम लगाने का. यू वॉन्ट मी टू रिपीट द समर्थ? 62 is 12.5 percentage more than n. मतलब n है, n के ऊपर 12.5 percentage extra. That basically means 100 percentage of n तो already है, उस पे अपन 12.5 percentage और बढ़ा रहे. This will give us what? 112.5 percentage of n being 62. Now, reading the question carefully, being proactive at that moment, they're asking for 56.25 percentage of it. That is basically half of 112.5. So, half of 112.5 is 56.25. Same way, half of 62 is what? 31. Clear? अपना question क्या था? What is 56.25 percentage of the number? 31. Can we do this using fractions, guys? क्या ये अपन फ्रैक्शंस में कर सकते हैं? कैन यू क्विकली टेल मी 12.5 percentage of a number is how much? 1 by 8. So what are they saying? They are saying n plus 1 by 8 of n is 62. Yes, n plus 1 by 8 of n is 62. That gives us what? 8 अपन LCM लेंगे, 8 plus 1 9. 9n by 8 is 62. What are they asking from us? 56.25 percentage. What is 56.25 percentage, guys? 56.25 percentage क्या है? Can we split this? 56 percentage को 50 percentage and 6.25 percentage बोल सकते हैं? Yes. What is 6.25 percentage of any number in fractions? जल्दी से बताओ मेरे को, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बताओ. What is 6.25 percentage of any number? Quick. Fraction में 1 by 16. Beautiful. Very good. This is 1 by 16. तो 50 percentage को अगर मैं डिनोमिनेटर 16 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 8 by 16. What am I supposed to find out? I should find out 8 by 16 plus 1 by 16. That is nothing but 9 by 16 of the number. Yes, हमें क्या पता है? 9 by 8 of a number पता है, हमें 9 by 16 ढूंढना है. मतलब क्या चल रहा है इधर? इसको अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो I will get 9 by 16. सेम वे में इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा. What is half of 62? 31. There we go, our answer. So whether you use fractions or you use this method, equation method, okay, which we also call multiplicative factor, but उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे. Okay, we will get the answer if we are being proactive. What do you mean by proactive? At that moment, उस समय पे आपको दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के, you will have to figure out a lazier way of doing it. Proactive में active word तो है, but इसका मतलब क्या है कि आप lazy हो. ठीक है? Done? चलो आगे बढ़ेंगे. Next question. Read this question carefully. Crystal clear. Very good. समर्थ से क्रिस्टल का स्पेलिंग रॉन्ग है, बट ठीक है, मैं वर्बल नहीं पढ़ा रहा, मैं क्वांट पढ़ा रहा, बट ओके.
चलो चलो अभी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया अपन, एक बार चीयर्स करेंगे. चीयर्स एवरीवन. Akbar Ali says C. Others? Akbar Ali says 96.06. 96.06 तो किधर भी नहीं है ना. लेखना से C. ओके ओके समर्थ, वेरी गुड. अनदर लेसन लर्नड. क्वांट के क्लास में अभी वर्बल भी पढ़ रहे. तन्मय से सी, वेरी गुड. गाइज आई एम नॉट सीइंग एनी लाइक्स गाइज, कम ऑन. अच्छा पढ़ रहे हो ना, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू टुडे. गो अहेड, हिट लाइक ऑन दिस वीडियो. वेरी गुड नवनीत, वेरी गुड अकबर अली, सुपर विपुल, वेरी गुड निकुंज, वेरी गुड कविता, superb Akshay, very good Mrinal. Okay, let's read this question first. Okay, due to a programming error in a calculator, it multiplied a number by 2 by 9 instead of 9 by 2. Let's say अपना number n है, our number is n. Okay, the given number is n. I want to find out what is the wrong value and what is the correct value. Wrong value क्या है इधर? What is the wrong value? Is it 2 by 9 of the number or is it 9 by 2 of the number? Quickly tell me. Wrong value क्या है? 2 by 9 है या 9 by 2 है? Which of these is the wrong value? 2 by 9. Very good, very good. How do we know that? Language used in the question. It multiplied a number by 2 by 9 instead of, मतलब ये करना था एक्चुअल में, ये करना था एक्चुअल में, बट क्या हो गया? ये हो गया. So this is the wrong value, this will be the correct value. Clear? Yes. So wrong value is 2 by 9 of the n and correct value is 9 by 2 of the n. Okay. Percentage error, to find out percentage error, we will use similar formula like percentage change. Okay, difference by reference है ना, base value. अभी error ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि कुछ गलत गया तो कितना गलत गया. Yes, if something went wrong, by how much, है ना. तो किससे कंपेयर करेंगे अपन? Will we compare a wrong value? Will we compare error with a wrong value? Or will we compare error with the correct value? I was supposed to take this route. Okay, Google Maps में बता रहा है I was supposed to take this particular route. Okay, but what happened? I ended up taking this route. I went wrong. Make sense? मैं गलत गया. Yes. बट कितना गलत गया? कैसे पता चलेगा कि मैं गलत गया? बाय कंपेयरिंग इट विद द करेक्ट रूट, है ना. कि मेरे को ऐसे जाना था बट मैं ऐसे गया, मतलब इतना गलत गया यहां से, फ्रॉम हियर. सो द बेस वैल्यू विल ऑलवेज बी द करेक्ट वैल्यू इनटू 100. यस. सो लेट्स लुक एट दिस नाउ. अभी मेरे को करेक्ट वैल्यू, रॉन्ग वैल्यू, ये सब मेरे को फ्रैक्शन में नहीं करना है. I don't want fractions, I don't want variables. So what will I do? Become lazy. Yes. Substitute n का value. Let n, I want to substitute n का value. I want to substitute n का value in such a way कि मेरे को ना तो fraction आए ना decimal आए. मेरे को fraction नहीं मांगता, नहीं चाहिए. तो what will I assume n as? Very good Akshay. 18. Yes. क्यों 18? Why are we taking 18? Because when we multiply this with 9, अपना cancel हो जाएगा, 2 से भी cancel हो जाएगा. So we basically took the LCM of 2 and 9. Very good Shubhangi, superb Vipul, very good. So if n is 18, wrong value will be what? 2 by 9 of 18, which is 4. Correct value will be what? 9 by 2 of 18, which is 81. Clear?
Sorted here. So now we have the wrong value, we have the correct value. We will put it in our formula. So what will it be? What is the difference, guys? 81 minus 4, 77 का difference, correct? 81 minus 4 is 77 का difference. What should be my base? मेरा base क्या होना चाहिए? Correct value, which is 81 into 100. Now if I want I can go for the calculator. If I want I can sit and divide manually, but उसमें बहुत time खाएगा, right? बहुत ज़्यादा time खाएगा. Will you agree? तो अपन क्या करेंगे इधर? We will use a little bit of जुगाड़, okay? Yes, 81 अगर 80 होता, 81 अगर 80 होता, then what will be our answer? अच्छा, first पहली चीज, okay, ठीक है, 81 और 80 को नहीं छेड़ेंगे पहले. First let's look at the answer choices and eliminate the obvious wrong ones. Obvious wrong values क्या है? 4% definitely नहीं होगा क्योंकि बहुत close है. 81 and 77 are very close. Yes, so this is out. 42.8% is also out. Why? Because these are very close. 77, 81 बहुत बाजू बाजू में. Yes. Further, now if I assume that the base was not 81, it was 80. So 77 by 80 into 100 would have been how much? ये कितना हो जाएगा? 5 by 4, correct? Yes, 5 by 4. 5 by 4 is how much? 1.25. I basically have to multiply 77 with 1.25. Are you understanding this, guys? Yes or no? So 77 into 1.25 will be how much? 96.25. Yes. अभी ध्यान से सुनो, अपन ने कुछ किया, उसका रिजल्ट हमें दिखेगा, राइट? लुक एट दिस. अपन ने क्या किया? वी रेड्यूस्ड द डिनोमिनेटर. यस, वी रेड्यूस्ड द डिनोमिनेटर. 81 था, उसको 80 बनाया, मतलब वी विल इंक्रीज द डिनोमिनेटर अगेन. इंक्रीज द डिनोमिनेटर. इफ द डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, व्हाट विल हैपन? डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू डिक्रीज होगा. एग्रीड? So we are looking for a value that is much lesser than 96.25, much lesser. Yes, 96.18 is एकदम almost close, नहीं, much lesser, which is 95.06%. ठीक है? Yes guys, understood? Everyone? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? What did we do? पूरे क्वेश्चन में अपना कैलकुलेशन कितना था? इतना ही था बस. This was our calculation. That's it. Yes. वरना कैलकुलेटर होगा ऐसे. अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप फंस जाएं, if you get stuck in some complex situations like this, all that you will have to do is use the calculator. आंसर आ जाएगा, खत्म करो, आगे बढ़ो, क्योंकि कैट में कैलकुलेटर है. चलो, quickly try this question. Let's see how many can answer this. ठीक है, जल्दी से ट्राई करो. Sir, strategy for modern math. Last year CAT 98.5 percentile, aiming for IIM ABC. Strategy for modern math. It's as good as strategy for any concepts. Yes, get your concepts right. Get PNC right, probability right, get binomial expansion right, set theory right. Yes, get sequence and series right. Yes, get the concepts right. Once your concepts are correct, after that you don't have to worry about anything. Yes, concepts, practice, that's all you need. Okay, Sishir. Okay, Navneet is saying D. Akbar Ali is saying D. Lekhna, Leonard, Nikunj, all are saying D. Okay, all right. हिमेश is saying B. ठीक है. अक्षय, मृणल, D again. All right. AD is telling D.
Mrinal, Vipul, okay. Majority people have said D. Himesh for some reason has said B. Okay. Alright, let's look at this question. Let's read the question carefully. I've told this like a billion times. This is 1 billion and 1th time. Okay. Arithmetic is all about language. It is not like algebra, it is not like geometry that where you have equations or where you have diagram. Arithmetic is all about the language. Yeah. Let's read the question carefully. The new price of a car is 5,000 more or 11% more than the old price. Let's read this again. Okay. The new price of a car is, ये वाला पार्ट को अपन ब्रैकेट में रखेंगे, और है उसको ब्रैकेट में रखेंगे. ओके. The new price of a car is 5,000 more than the old price. Old price को अपन P रखेंगे. ठीक है. New price of a car is 5,000 more than the old price. Make sense? They're asking what is the new price of the car. This is one equation. What is the other equation? ये वाला और को अपन ने ब्रैकेट में रखा, अभी ये वाला और को अपन ब्रैकेट में रखेंगे. New price of a car is 11% more than the old price. तो old price है plus 11% of the old price. Correct? Yes. Got it? So now you have two equations, two unknowns. Let's go for it. What will we get? If I equate these two, अगर इन दोनों को मैं equate करूंगा तो what will I get? I will get 5,000 plus P is the same as P plus 11% of P. P cancel. What am I getting? I'm getting 11% of P is 5,000. Yes. What do I have to find out? I have to find out the new price. तो ये आदत डाल दो. Put this as a habit. Write down what you are looking for. Yes, अपना जो रफ शीट है उसके कॉर्नर पे जहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे कॉर्नर पे राइट डाउन क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है. दिस वे यू विल नॉट मेक दिस ऑब्वियस मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ यू हैव मेड. यस. सो व्हाट विल हैपन नाउ? P is 5,000 by 11 into 100 है ना. 11% is 11 by 100. So 5,000 by 11 into 100. Yes. Approximately क्या हो जाएगा ये? Approximately. Okay, I'm not going for the correct answer. Approximately this will be how much? This will become 50,000. Yes. Will it be more than 50,000 or less than 50,000, guys? Will this be more than 50,000 or less than 50,000? फटाफट से बोलो. This will definitely be less than 50,000. Yes, definitely less than 50,000. या अगर ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है, तो what will you do? You know that 5,000 by 11. देखो ध्यान से देखो. 500 by 11 is 45.45. So 5,000 by 11 ये हमें पता है ना. 500 by 11 परसेंटेज में अपन ने पढ़ा है. So 5,000 by 11 will be what? 454.5454. This into 100, इसको into 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? This will become 45454.5454 so on. Correct? Just telling you, अगर approximation से नहीं करना है सर, ऐसे करना है तो कैसे करोगे? Okay? So finally what you will get? Old price is somewhere around approximately equal to what? 45,454 rupees. What are they asking for? They are not asking for old price. They are asking for the new price. New price क्या हो जाएगा अपना? New price will become equal to 45,454 plus 5,000. क्यों? New price is 5,000 more than the old price. So new price क्या हो गया? 45 plus 5 is 50,454. Yes. ये जो आपने गलती करी है, this mistake, please don't make it. Always write down what is asked. Expected value लिख के रखो ताकि आप गलती ना करो. Okay.
So what is our answer? 50,455 closest. Yes, exactly AD. यही होता है. People think CAT is about speed alone. नहीं, speed plus accuracy. You have to be correct, but at what cost? At the cost of time. You have to do it quickly, but at what cost? At the cost of accuracy. इनमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी, very important. Okay? Yes. Jitesh, either which ways, that's basically what we've done. Even if you want to do it using values, you can. So if P is what? 5,000 and 2 zeros by 11. So n will be how much? N is nothing but 11% more. Yes, so 100 पे 11% is 111%. Decimal में लिखेंगे तो 1.11 of 500,000 by 11. Got it? Everyone, any issues here guys? कोई डाउट, कोई दिक्कत? No, right? Done. तो ये देखो, if you do it using this way, you know your denominator will be less than 10. आपका denominator will be less than 10. That means the entire value will be a little more than 50,000. 50,000 से थोड़ा ज़्यादा. This is too big, less, एकदम precise नहीं होगा. This is our answer. Okay, done. चलो. Okay, before we move on guys, every Sunday 12 o'clock we are doing a combat. मैंने बोला है आपको ये mandatory है. This is mandatory for anyone who wants to be able to crack CAT 2021. Okay, हर संडे को फ्री टेस्ट है. कल संडे, कल है, कल 12 बजे सबको देना है. इफ यू गेट अ रैंक विद इन फर्स्ट 200 आपको स्कॉलरशिप मिलेगा. रैंक मिला या नहीं मिला आपका प्रैक्टिस होते रहेगा. ओके, यस. अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो, ऐप को डाउनलोड करो, सुराना लाइव यूज करना मत भूलना. ओके, चलो नाउ लेट्स मूव टू प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी. आपको बुक्स में दे कॉल इट प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी. मैं इसको बुलाता हूं A/N रूल. ओके, तो अब से इसको अपन क्या बुलाएंगे? A/N रूल. यस, नाउ लुक एट दिस. विनीत 11% मोर देन, मतलब वो 1.11 जो अपन ने किया था वो 1.11 जो अपन ने बोला था वो क्या? हाँ, अच्छा, कल का वो कंफ्यूजन पहले क्लियर कर देता हूं. टुमारो सिंस वी हैव द कॉम्बैट एट 12 o'clock एंड एवरीबडी शुड गिव. ओके, कॉम्बैट कल 12 बजे होगा. यस, सो व्हाट वी विल डू इज आवर क्लास, बैकबेंचर्स बैच क्लास ऑन यूट्यूब विल हैपन एट 11 o'clock. ठीक है. इफ देर इज एनी चेंज इन द टाइमिंग आई विल इन्फॉर्म ऑन टेलीग्राम ग्रुप. चले, इसको अभी के लिए इसको अननोन रखते हैं. आई विल इन्फॉर्म द चेंज इन टाइम ऑन टेलीग्राम ग्रुप. क्लियर? ऑलराइट, सो लुक एट दिस. प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी की बात करते हैं फटाफट से. यस, let's say that some value increased from 2 to 3. yes, 2010 से 2020 2 rupees से 3 rupees हो गया कोई चीज. yes, so what is the percentage increase? quickly tell me what will be the percentage increase 2 से 3. जल्दी, अभी टाइम नहीं लगना चाहिए. क्विक. 2 से 3% इंक्रीज कितना हुआ? वेरी गुड लेनर्ड, वेरी गुड. 50%. अकबर अली नहीं, तोड़ दुश्मन की नली. गलत. व्हाट इज हैपनिंग? डिफरेंस इज 1. बेस क्या होगा? स्मॉलर वैल्यू. परसेंटेज इंक्रीज माने बेस छोटा वैल्यू है ना, इनटू 100 विच इज 50%. यस. Now ulta, from 2020 to 2010 how much is the decrease? Percentage decrease कितना हुआ यहां पे? Percentage decrease will be how much?
सेम डिफरेंस 1 का है, बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू विल बिकम व्हाट, ग्रेटर वैल्यू, क्यों, क्योंकि डिक्रीज पूछा है. सो 1/3 into 100 which is 33.33%. Yes, here I want you to notice something. Look at this. अगर A to B, if from A to B there is an increase of 1/2, then reverse में A to B अगर increase 1/2 का था तो रिवर्स में डिक्रीज कितना होगा, 1/3 का होगा. Yes, this will follow in any case. कोई भी केस में करो ये फॉलो होगा. फॉर एग्जाम्पल 100 से 120 हुआ, परसेंटेज इंक्रीज इज हाउ मच, क्विकली टेल मी. 100 to 120 परसेंटेज इंक्रीज इज हाउ मच. हेलो अमन, गुड आफ्टरनून. 50 नहीं, दीपायन नो, 20. वेरी गुड. 100 to 120 is what? Difference is 20 by smaller value into 100, right? Which is basically 1/5. तो 1/5 का इंक्रीज है. इसमें अगर मैं आपको पूछूं व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज, फटाफट से बताओ परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, क्विक क्या होगा. 20 का डिफरेंस है, डिनोमिनेटर में 120 आ जाएगा. यस, दिस इज बेसिकली व्हाट, 1/6. सो 1/5 इंक्रीज गिव्स अ 1/6 डिक्रीज. एग्रीड? 1/5 इंक्रीज गिव्स अ 1/6 डिक्रीज. इन अदर वर्ड्स, रीड दिस केयरफुली. इन अदर वर्ड्स, अगर आपका इंक्रीज a/n है, इफ योर इंक्रीज इज a/n, then the consecutive decrease is going to be a/n plus a. इसको मैं डब्बे में डाल लूं. इसको अपन क्या बुलाएंगे, a/n रूल बुलाएंगे. ठीक है, ये a/n रूल सिर्फ मैं बुलाता हूं, a/n रूल. नया नाम क्यों देने का है अपने को, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी बुक्स में बुलाते हैं अपन, इसको a/n रूल बुलाएंगे क्योंकि ये a/n रूल है. सिंपल है ना. Correct, Mrinal. This literally is the Brahmastra of percentages. This is your nuclear weapon. Yes, this is your car 98. समझ में आ रहा है, with 16x scope. ये ऐसी ऐसी जगह पे यूज करेंगे अपन, you will not be able to imagine. Yes, whenever there is an increase of a/n, there will be a consecutive decrease of a/n plus a. Clear? Yes. एग्जाम्पल ट्राई करते. रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, ट्राई एंड आंसर दिस. चलो जल्दी से. लाइफ चेंजिंग हैक. करेक्ट रिचा. यस एकम. या देर आर 2 places where this will be useful. One, when the same quantity increases and then it decreases, yes, to the original value. To the original value. For example, this question, ये वाला इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, सेम क्वांटिटी इंक्रीसेस एंड देन डिक्रीसेस टू द ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, चलो. ओके, लेनर्ड, निकुंज, अकबर अली एंड रिचा आर सेइंग डी. सरस एंड एडी आर सेइंग सी. एडी आपका नाम क्या है भाई? एडी बुलाता हूं तो मेरे एडियो में जो क्रैक है वो याद आ जाता है, फिर दर्द होता है. सो नेगेटिव मेमोरी एसोसिएट हो रहा है. नहीं, पूरा नाम बता दो. ओके, इशिता इज सेइंग डी, नवनीत इज सेइंग सी, हिमेश इज सेइंग डी. ओके, अपराजिता, ऑलराइट. ओके, चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ. पहले लेट्स रीड दिस. ओके, इफ द वैल्यू ऑफ x increases by 7.69%, then how much should it be reduced to bring it back to the same value? Yes, let's do this using assumption. First let's do this using assumption, क्योंकि थोड़ा बताना पड़ता है कि मुश्किल मेथड बता के फिर इजी मेथड बताएंगे तो आपको लगेगा हाँ कि इजी मेथड इजी है. राइट, पहले इजी मेथड बता दिया तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो लेट्स से ओल्ड वैल्यू, इनिशियल वैल्यू is 100. So what will be the final value? 7.69% of 100 increase on this will give us what? 107.69. Yes. So what is the percentage decrease now? From here to here, percentage decrease will be how much?
7.69 by 107.69 into 100. Yes, for this you will have to put it in your calculator and do it. ठीक है, this is not my headache. ये आप calculator में डालो, आप निकाल लो. Okay. Alternatively, what we can do it using A by N rule. Yes. 7.69 percentage fractions में कितना है? 7.69 percentage fractions में कितना है? What is 7.69 in fractions? 1 by 14? नहीं ना हिमेश, 1 by 14 is 7.14. 1 by 13. Very good. Yesterday I told it with a disclaimer. Yesterday जब मैं 1 by 13 का वैल्यू बता रहा था तब मैं डिस्क्लेमर के साथ बता रहा था कि ये शायद यूज आएगा, नहीं आएगा. अगर याद हो गया तो बहुत बढ़िया, वरना देख लेंगे. Yes, 1 by 13. So if something increases by 1 by 13, then what should be the consequent decrease? 1 by 13 plus 1, that is 1 by 14. Correct? Yes. तो हमें क्या निकालना है? We basically just have to find out the value of 1 by 14. 1 by 14 कितना? 7.14 percentage. End of story. कितना डिक्रीज है? 7.14 percentage. Clear everyone? If you have any doubts, now will be the time you will ask, otherwise you will forever remain quiet. आज चीयर्स करे थे, बीच में भूल गए. ओके, क्लियर? ए बाई एन रूल इज क्लियर. अभी ए बाई एन रूल के लिए चीयर्स कर लो फटाफट. ए बाई एन रूल के लिए एक बार फटाफट से चीयर्स कर लो. चीयर्स एवरीवन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करो. दिस इज अनदर एग्जाम्पल, अनदर प्लेस. वेयर एल्स विल यू यूज ए बाई एन रूल? व्हेन two quantities that are inversely proportional to each other yes and one quantity increases leading to decrease in another quantity. अगर आपको कोई भी दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टर्म्स दिखे, अगर आपको कोई भी दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टर्म्स दिखे, यू कैन यूज दैट देयर. ओके, रीड दिस क्वेश्चन. रिवर्स करने का एडी सिंपल. जैसे अगर कि कहीं पे बोला है कि डिक्रीज इज 1 by 14, तो उसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे अपन ने न्यूमरेटर को ऐड किया, 1 by 13 पे न्यूमरेटर को ऐड किया तो 1 by 14 हो गया. यहां पे न्यूमरेटर को डिक्रीज कर दो. 1 by 14 में से 1 को निकाल दिया 1 by 13. यस, अगर ये n by a by n है, मैं ये फॉर्मूला नहीं सजेस्ट करूंगा. यस, बट जस्ट टेलिंग. तो इंक्रीज क्या हो जाएगा? a by n minus a. ये मैं इरेज कर दे रहा हूं फटाफट से, ये आपके जहन में नहीं उतरना चाहिए. a by n रूल शुड ऑलवेज मीन a by n increase leading to a by n plus a decrease. Okay, all right, a lot of you are saying option B. Very good. Nikunj, Navneet, Ekom, very good. Others? Sir, how to find which is the base value? जितेश, बेस वैल्यू पे मैंने पूरा एक स्लाइड बताया था भाई. आप लेट ज्वाइन किए हो क्या? जितेश, हैव यू ज्वाइंड लेट? थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, यू विल सी. ओके, जल्दी करो गाइस, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है. क्विक. B, everyone? All right. The number of papers are exactly enough for 36 students to write an exam. If the number of students who appear for the test are 40, then what is the change in the average number of papers that each student will get? What is average? Average is given by sum of the terms by number of terms. Correct? Average is given by sum of the terms by number of terms. अगर अपना sum constant है, if the sum is constant, then what will you get? You will get that average and number of terms are inversely proportional. Yes, अगर ज्यादा लोग ज्यादा होंगे, एवरेज कम हो जाएगा. लोग कम होंगे, एवरेज बढ़ जाएगा. सिंपल. Yes or no? Yes. So for example, let's say sum अपना 200 है. If the number of people are 10, then the average will be 20.
if the number of people become 20 the average will become 10. average कम हो गया, number of people बढ़ने पे when this increases average decreases. clear? so since they are inversely proportional हम यहां पर भी a by n rule लगा सकते हैं. yes, so they are saying what, number of students पहले 36 थे, अभी कितने हो गए, 40 हो गए. from 36 they increased to 40. agreed? yes, from 36 to 40 increase, percentage increase कितना है, difference is 4. increase पूछा है तो base will be smaller value. yes, which is how much, 1/9. if there is a 1/9 increase in the number of people, then in average there will be a 1/10 decrease. A by n rule applied in inversely proportional terms. n and a are inversely proportional, मतलब अगर n बढ़ेगा तो a घटेगा. yes, so a will decrease by 1/10. 1/10 is how much, 10% का decrease, which is option B. got it everyone? yes, so we've seen two places. one, same value increase decrease. number two, inversely proportional terms. yes, मैं आज के सेशन का डीपीएस डेली प्रैक्टिस शीट शेयर करूंगा. आई विल शेयर द डीपीएस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, चलो अभी फटाफट रैप करते हैं गाइस. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इफ यू आर प्लानिंग ऑन टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन. अगर आपको कैट ढंग से क्रैक करना है, गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. मेरा कोड है सुराना लाइव, ये यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 1-on-1 मेंटरिंग का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आपको पर्सनलाइज्ड कंटेंट मिलेगा एंड यू कैन डिस्कस एनीथिंग विथ योर मेंटोर 1-on-1. yes, please attend the special class. today's special class is at 6 p.m. आज 6 p.m. today 6 p.m. we are doing questions on number system. अपन ने नहीं किया है but still try attending it. okay, it is on the app, फ्री क्लास है, आके देखो. मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ा रहा हूं. yes, we'll do all of these questions. मैं DPS में डाल के भेजूंगा, फिर we will discuss them. okay, and there are a lot of ongoing and upcoming batches. please enroll into them by taking the subscription. सब्सक्रिप्शन में अभी ऑफर चल रहा है. राइट नाउ देयर इज एन ऑफर. इफ यू बाय 12 month सब्सक्रिप्शन यू विल गेट 3 months free. if you buy 24 month सब्सक्रिप्शन you will get 3 months free. 12 months is for people who are preparing for CAT 2021 and other management entrance tests. क्योंकि 12 months में आपका, in these 12 months not only your test preparation but आपका GD, PI, WAT सब कवर हो जाएगा. स्ट्रैटेजी सेशंस रहेंगे, टिप्स रहेंगे, क्रैश कोर्सेस रहेंगे और किलर नंबर ऑफ बैचेस स्टार्ट होंगे. okay, and 24 months is for someone who is preparing for CAT 2022 and other management entrance tests. yes, इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा. ये लेने के लिए आप क्या यूज करोगे, कोड सुराना लाइव. ठीक है, ये मत भूलना. डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड सुराना लाइव कहीं पर भी. ठीक है, बिना इस कोड के यूज ही मत करियो. yes, all of these concepts we will be doing in tomorrow's class. yes, don't forget to take the subscription using the code Surana Live. This is the pricing for Plus, this is the pricing for Iconic. yes, install the app, start using it now. I will see you tomorrow. yes, don't forget to hit like on this video before leaving. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो फटाफट. and please join this Telegram group. I will be sharing all notes and daily practice sheets on this. okay, notes मैं शेयर करूंगा PDF फॉर्म में and I will be sharing daily practice sheets. got it? alright guys, thank you so much. thank you for being a part of the session. I will see you tomorrow. टाइम जो है मैं फिक्स करके बता दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे. alright, thank you so much. keep learning. let's crack it.